तो जून 23 वेरिएंट 42 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, which is dealing with the effectiveness, evaluate the effectiveness of monetary policy to reduce the rate of inflation. Okay, so पहला आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा इन्होंने प्रॉपर एक डायरेक्शन दिया है that your essay's first part, the knowledge and analysis, mainly has to be about how you can use the monetary policy to reduce the rate of inflation and how this policy may affect a government's ability to achieve its other macroeconomic aims. So, few things. Number one, the question is about the effectiveness of monetary policy. That means this question ke andar, we don't need to compare monetary with other, right? तो फिर that means के आपने monetary how it will work and how it will not work को argue करना है, ठीक है? और खास तौर पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक अ डिस्कशन कि वो जो दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक एम्स होते हैं, हाउ विल इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन दोज एज वेल, ठीक है? सो हाउ शुड वी गो अबाउट दिस वन? जहां तक पिछला क्वेश्चन था फिजिकल पॉलिसी के अंदर यूजली हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन की, राइट? मॉनेटरी इज नॉर्मली हम एएस के अंदर बात करते थे, मॉनेटरी इज अबाउट मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, बट रिमेंबर दैट देयर आर मोर थिंग्स इन मॉनेटरी पॉलिसी, सो आई जस्ट मेंशन दोस अभी इन जस्ट अ बिट. सो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है that is under the control of is controlled by the central bank. जिस तरह से fiscal policy is controlled by the central government, the central bank basically controls this. It's controlled by the central bank using money supply and cost of borrowing, ठीक, to maybe like to achieve macroeconomic objectives, right? थोड़ा सा abbreviations मैं करूंगा. So to achieve certain macroeconomic objectives. अब, what are the tools that we have in place? Please इसको words के अंदर अब तुम लोग खुद करना शुरू करो. So the things we have is changes in interest rates. That's one thing. Then you have control of money supply. Money का chapter जब तुम पढ़ते हो तो you get a much wider understanding of this. अच्छा, ये दो तो हम ज्यादातर बात करते हैं, but remember, even like exchange rate, let's call it exchange rate management, to devalue, to revalue, to keep it strengthened, you know, and reserve asset ratios. ये क्या होते हैं रिजर्व एसेट्स रेशियोज? वो जो हम याद है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर आप लगाते हैं, इम्पोज्ड ऑन कमर्शियल बैंक्स, ये क्या होती हैं? जस्ट टू वेरी क्विकली मेंशन, आगे एफसी के अंदर आई विल डील विद इट, बट ये वो वाले रिजर्व रेशियोज हैं कि जब भी बैंक्स के पास कुछ सर्टेन डिपॉजिट्स आते हैं, उस डिपॉजिट्स का कितना परसेंटेज बैंक हैज टू कीप टू देमसेल्व्स एंड हाउ मच कैन दे लोन आउट. तो इससे द अमाउंट ऑफ मनी लोन दे कैन कंट्रोल. इसको कैश रेशो भी कहते हो, लिक्विडिटी रेशो भी कहते हो, रिजर्व रेशो भी कहते हैं.
एट द सेम टाइम एक स्पेशल डिपॉजिट्स भी होते हैं, वो भी रिजर्व एसेट्स होते हैं। वो कौन से वाले मैं बात कर रहा हूँ? जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कहती हैं कि ऑफ द डिपॉजिट्स हम चाहते हैं कि आप इतने पैसे हमारे पास रखवाएं। दिस कुड बी सिंपली फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अगर कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जो डिपॉजिटर है उसके पैसे खतरे में हो सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू कीप सब सर्टेन सम ऑफ द बैंक्स मनी, कि कल को जरूरत पड़े तो वी कैन गिव दिस आउट टू द बैंक्स, अश्योरिटी मनी सॉर्ट ऑफ, यू नो एनी हाउ। सो ये तुम्हारा थोड़ा सा टूल्स का मेंशन हो गया। अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि अभी डिटेल में तो जाना ही है। I think one or two things that I will also talk about here is certain definitions, because उन्होंने inflation की बात की है, तो I will define. So I think अब तक तो हमारी definition of inflation though should become very naturally to you. Um, so if you're defining inflation, you're going to say it is, वही हमारे keywords: persistent rise in general price level over a period of टाइम, राइट? तो ये पूरी हमारी हो जाती है। बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर और अदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की भी बात की है, तो वी डू हैव टू मेंशन दैट गवर्नमेंट also aims to achieve other macroeconomic objectives। थोड़े से मेंशन कर लेते हैं, like achieving low unemployment, right? They want to achieve like sustainable economic growth. They want to achieve a stable balance of payments, mostly on the equilibrium side. Their aim is mostly on the equilibrium side, right? Okay, G. So this is a good intro to an essay, which sort of like gives us an idea कि what are we going to be talking about. तो फिर मैं जो ऊपर tools हैं, I'll try to use those tools and connect it to how they will control inflation. ठीक है, and at the same time उसके साथ अगर कोई certain advantages भी मिल जाते हैं, तो we might as well just discuss those as well. Okay, जी. सो पहली जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, द फर्स्ट वन आई वांट टू डील विद इज कि अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हैं, तो वी हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर व्हाट वील डू इज वी विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। मैं इसको थोड़ा सा पॉइंटर्स में कर लेता हूं, बिकॉज आई एम श्योर कि यू ऑलरेडी नो। इसको मैं यूज करूंगा जो हमारा मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है। बेसिकली वो क्या होता है? सो इफ यू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, तो योर एक्सप्लेनेशन शुड बी कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से द वर्ड्स आई वांट टू सी इज योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग basically rises as a result of it। ठीक है, एंड सेविंग्स जो है वो भी बढ़ जाती है, वो राइज कर जाएगी। सेविंग्स इज गोइंग टू गो अप एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। अब जब ये दोनों बढ़ जाएंगे, तो इसका फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो सेव ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे। तो उसकी वजह से जो आपका कंजम्पशन स्पेंडिंग है या एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो बिजनेसेस हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एक्सपेंशन वगैरह के ऊपर, वो भी गिर जाएगा। एंड देयरफॉर ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी गिर जाएगी। दैट्स द कनेक्शन वी वांट टू शो कि हाउ दिस विल हैपन। और इसका पूरा इम्पैक्ट क्या होगा कि दिस होल थिंग इज गोइंग टू रिड्यूस द डिमांड पुल
inflation that you basically get. Should we make a diagram over here? I think you should make a diagram. It's a good place to make a diagram. Remember, 8 2s के अंदर we like diagrams. It's just part of your overall explanation. Okay? तो इसमें जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा सिंपल ADAS का बनाएंगे हम. चाहो तो LRAS वाला बना सकते हो. But since I don't need to discuss anything else, all I am discussing, अब मैं आगे भी reference दे दूंगा इस diagram का, that how, as a result of this whole transmission mechanism, the AD fell, decreased, and shifted to the left, and that caused the prices to fall, and at the same time, बाकी दूसरे macroeconomic objectives के ऊपर भी we should have a discussion. Now that we are doing this, might as well just mention कि किस तरीके से फाइन ये तो हुआ, लेकिन जो दूसरे आपके मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, द अनएम्प्लॉयमेंट, although unemployment rose and economic growth also fell. Although ये थोड़ा सा evaluative बात हो जाएगी तो मैं इसको evaluation के लिए छोड़ दूंगा, but at least जहाँ एक पूरी थीम के अंदर एक बात चल रही है, तो might as well just go with this and explain the whole concept. ठीक हो गया? So that is one thing that we can do. Okay? Uh, इसके अलावा आई एम ऑल्सो थिंकिंग जो एक अच्छी डिस्कशन हो सकता है, दैट इज ओके, इट्स अ गुड डिस्कशन, पॉलिसी डिस्कशन. तो एक तरफ हमने कहा इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज. अब यही इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज जो है ना, आपकी एक्सचेंज रेट को भी इफेक्ट कर सकता है. सो नंबर 2 के अंदर योर सेम मॉनेटरी पॉलिसी can also operate through exchange rate. तो इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? यू नो हाउ वी आर सेइंग इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो. तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इफ यू रिमेंबर, एक हॉट मनी का आइडिया, द कैपिटल फ्लो ऑफ मनी, द कैपिटल फ्लो. Okay, so we can talk about that because of the rising interest rates, um, hot money is attracted into the country, which causes the demand for your currency to rise and eventually appreciates the currency, right? That's what happens. अब जब appreciation हो जाएगी, तो उस appreciation की वजह से किस तरीके से inflation, because remember the first part of the question is about us controlling that. तो इसके अंदर फिर क्या होगा जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी? So the price of imports is going to fall down, and our import expenditure is going to go down. तो import expenditure अगर कम हो जाता है, तो import expenditure कह लो, I think इसको import expenditure से तो AD को मैं बढ़ा दूंगा. तो वो डिमांड साइड से तो इन्फ्लेशनरी हो जाएगी. इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इन्फ्लेशन कंट्रोल हो. तो इसको हम कॉस्ट, सो प्राइस ऑफ इंपोर्ट फॉल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा? लोअरिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, और उसकी वजह से जो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा. क्योंकि बेसिकली लोअरिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से आपके रॉ मटेरियल्स चीप हो जाएंगे, जिससे एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगा, एंड एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइसेस विल फॉल डाउन, एंड दैट कैन हेल्प. अप्रिसिएशन से हमारा
अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, सो लेट जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे आल्सो. व्हाई एम आई सेइंग? ओके, या, ओके, एडी एक्चुअली गिरेगा ना. वो भी सेकंड ऑल्टरनेटिव इज दिस, अप्रिसिएशन का. सॉरी, एक तो अप्रिसिएशन का हमने ये लिंक बनाया, लेट्स कॉल इट ए. और दूसरा अप्रिसिएशन का लिंक हम ये बनाएंगे कि जब करेंसी अप्रिशिएट करेगा तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स विल राइज, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू विल फॉल. प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स विल फॉल, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपेंडिचर विल राइज. ओवरऑल एक्स माइनस एम की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू फॉल, एंड एडी इज गोइंग टू फॉल, जिससे आपका डिमांड फुल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाता है. सो अगेन, एक्सचेंज रेट के थ्रू भी हमने इस बात को शो कर दिया कि जब इंटरेस्ट रेट से आपकी एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो फिर उसका ये इम्पैक्ट आएगा. उसके बाद आप, अगर हम रिजर्व रेशियोज की बात करें, तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो बेसिकली आवर इंटेंशन इज दैट यू वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई. ओके जी. तो दैट कुड बी आवर लाइक third policy here, if you want to discuss that. So the third policy we want to do is that you want to reduce the money supply. Okay? रिडक्शन कैसे हो सकता है? एक तो सिंपल, सेंट्रल बैंक आए और बॉन्ड्स बेचे और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर जो है मनी बाय बैक कर ले. ठीक है. सो वन इज के सेंट्रल बैंक buy money and sell bonds. एक तरीका ये है. एक तरीका है रिजर्व रेशो इंक्रीज कर दे. Banks will have to continue to hold uh, the money rather than loaning it out. ज्यादा बड़ा परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिजर्व रेशो इज 5%, तो एवरी लाख का 5% बैंक्स विल कीप, एंड द रेस्ट 95% दे कैन लोन आउट. बट इफ द बैंक्स डिसाइड, सेंट्रल बैंक डिसाइड्स कि अब रिजर्व रेशो हम 5 नहीं 6 करते हैं, तो now the banks will have to hold 6% and now they can loan out 94%. ओके. सो लोनिंग आउट कम हो जाती है, क्रेडिट क्रिएशंस कम हो जाती हैं. और बैंक से भी है, जैसे यहाँ पे आपने बैंक्स को अब बॉन्ड्स पकड़ा दिए और उनसे पैसा ले लिया, तो ये दोनों तरीके जो हैं वो मनी सप्लाई को कम करते हैं. जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, इट रेजेस द इंटरेस्ट रेट, एंड एवरीथिंग अबव जो हमने डिस्कस किया है दैट इज गोइंग टू हैपन. तो that is the third policy discussion that you can make on this. अभी तक हमने इन्फ्लेशन की कंट्रोल की बात की है. वी हैवंट स्पोकन अबाउट एनी अदर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी. ओके. बिकॉज चक्कर क्या है कि आपके दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स गेट्स अफेक्टेड आल्सो. ठीक है. सो वी कुड sort of like say that monetary policy can be used to control inflation, but it has implications on other objectives. अब मैं इसको फिगर के साथ भी इसको लिंक दे सकता हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हम बात कर रहे थे, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, इसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो गिर जाता है एज रियल आउटपुट फॉल्स. हमने डायग्राम के अंदर, आप रेफरेंस दे सकते हो ऊपर डायग्राम का, किस तरीके से रियल आउटपुट जो है वो y0 से y1 पे आ गया बिकॉज ऑफ एडी गोइंग फ्रॉम AD0 टू AD1. राइट. सो इस तरीके से, सो दैट्स अ प्रॉब्लम.
you have a contradiction. साथ ही में हमें ये भी पता है कि it leads to higher unemployment. And why will this happen? Because of demand for labor. Because AD गिरेगा तो demand for labor भी फॉल करेगा. एज यू नो कि ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, द होल सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट. बिकॉज ये इफ यू सी एडी इज फॉलिंग, दैट्स अ सिक्लिकल प्रॉब्लम. तो एडी गिरने की वजह से जो है आपकी लेबर मार्केट के अंदर डिमांड फॉर लेबर आल्सो फॉल्स, which causes their wages to fall down, and then it creates a lot of other complications in the economy. ठीक है. One of the things that I would like to mention over here, because मैंने पिछला जो क्वेश्चन कराया उसके अंदर भी हम इसको try to fit in, the whole trade-off ना, which means ये जो अभी हमने ऊपर explain किया है. So therefore there is a clear trade-off between achieving low inflation rate and low unemployment slash maintaining economic growth. तो क्लियरली ट्रेड ऑफ है ये. मैं सॉर्ट ऑफ लाइक फिलिप कर्व की तरफ अपनी थोड़ी सी के इंडिकेशन कर रहा हूँ. थोड़ा सा इसको मैं डिटेल के अंदर आगे रहे, हाँ, वी कैन टॉक अबाउट दैट, और वी कैन जस्ट डू इट राइट नाउ. अब जब यहाँ तक बात कर ही ली है तो माइट एज वेल जस्ट इट हियर. सो वो जो हमारा फिलिप कर्व है, देखिए जहां पे भी हमने डिस्कस करना होता है ना ऑब्जेक्टिव्स, तो वहां पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम फिलिप कर्व को लेकर आए. ओके, सो वी कुड से द सिंगल एल फिलिप curve can be used to show the relationship between inflation and unemployment. ठीक है. If you want to draw the Philip curve, be my guest. अच्छा है, we like diagrams, जरूर बनाना चाहिए. तो उसको मैं किस तरीके से शो कर सकता हूँ जो हमारा फिलिप कर्व बनता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस. तो मेरा वो अच्छा इवेल्युएशन का भी एक पॉइंट यहाँ पे आई sort of like put in. This is how our inflation, unemployment, short run Philip curve. Let's suppose we're at point A, where we have, let's say, 3% inflation and say 4% unemployment. We're at point A. तो होता क्या है कि जब आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करने जाते हैं तो आप एडी को बढ़ा के करते हैं, और उसकी वजह से जो है, बल्कि इसको लेट्स डू इट द ऑपोजिट वे, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन से उसका लिंक बनाना है ना हमको. लेट्स डू इट द ऑपोजिट वे. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. क्योंकि कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं ना, तो माइट एज वेल जस्ट ट्राई टू डू दिस. Like, for example, if our inflation is like over here at 10% and our unemployment is here at 3%, अब हम कह रहे हैं कि अगर हम अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो we're saying we're going to start increasing our unemployment. That's what the trade-off is. So if you try to control this, you're going to end up with more unemployment. ये आपका short run का concept होता है, right? So इन माई एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियसली अब जब डायग्राम बनाया है तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है. और ये जो मूवमेंट अलोंग होता है ना फिलिप कर्व पे, ये जो ए से बी हो रहा है, ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट. ठीक है, इन शॉर्ट रन
there is a trade-off between inflation and unemployment. So if we reduce unemployment, sorry, if we reduce inflation through contractionary monetary policy, then unemployment will rise as shown in the figure. तो ये इस तरीके से हम एक बात कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक ऑब्जेक्टिव्स की बात है, ये एक फिलिप कर्व को मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है डिस्कशन में। इसके लॉन्ग रन के अंदर जाके हम इसकी और थोड़े से इश्यूज को डिस्कस कर लेंगे। अनदर थिंग इज, क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, वी स्पोकन अबाउट इन्फ्लेशन व्हिच वाज की, देन वी स्पोक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, वी स्पोक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड सर्टेन रिलेशनशिप्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ बात नहीं की है, तो माइट एज वेल डू दैट. So we can say that monetary policy can also affect balance of payment. किस तरीके से? यू नो हाउ हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से अप्रिसिएशन हो गई। अब जब अप्रिसिएशन से हमने कहा प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स गिर गया था, और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। द होल थिंग caused AD to fall down and caused the price level to fall. However, जब एक्सपोर्ट्स गिरेगा और इंपोर्ट्स बढ़ेगा, तो जो हमारा करंट अकाउंट है, राइट, द अदर थिंग दैट्स गोना हैपन, एक तरफ तो ये डिस्कशन इज परफेक्टली फाइन, बट द अदर इज बिकॉज एक्स इज फॉलिंग एंड एम इज राइजिंग, हमारा जो करंट अकाउंट है वो वर्सन होना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड दैट मे बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो ये थोड़ा सा इसका, विल इट बी अ प्रॉब्लम और नॉट, आई एम श्योर कि मार्किंग स्कीम के अंदर दे विल गिव यू, इट्स अ गुड डिस्कशन बाय द वे। तो यहाँ पर अक्सर बच्चों के दिल में आता है जब वो ये वाला पार्ट करते हैं कि क्या हम मार्शल लर्नर्स को डिस्कस कर सकते हैं? तो एब्सोल्युटली कर सकते हो। यहाँ पर मार्शल लर्नर्स कंडीशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मार्शल लर्नर्स कंडीशन कहता है कि अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल शॉर्ट रन में तो आपका जब इनइलास्टिक होता है तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, इनफैक्ट यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर करंट अकाउंट। तो हम ये बात कर सकते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर जब पीईडी फॉर एक्सपोर्ट प्लस पीईडी फॉर इंपोर्ट इज लेस देन 1, मतलब इनइलास्टिक, तो शॉर्ट रन के अंदर अप्रिसिएशन जो है, द करंट अकाउंट विल improve इन द शॉर्ट रन। लेकिन लॉन्ग रन में इशू क्या हो जाता है कि लॉन्ग रन के अंदर ये जो तुम्हारी इलास्टिसिटीज है, ये जो इलास्टिसिटीज हैं वो इलास्टिक हो जाती हैं, and that will actually worsen in the long term. So it might not be so beneficial for us. तो एक तरफ जहां इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, वहां हमारा एक और जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, दिस इज हाउ दैट ऑब्जेक्टिव बेसिकली गेट्स अफेक्टेड। तो आई थिंक दिस इज अ गुड बिग एनालिसिस। आई थिंक वी आंसर्ड कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में यूज हो सकती है, बट एट द सेम टाइम उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। व्हेन वी गो टू इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के अंदर नाउ वी वांट टू फोकस आवर ऐसे ऑन
कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी may not help us control inflation, okay, and how it may have an impact on our other macroeconomic objectives. क्योंकि the question is about the evaluate the effectiveness, right? So जब हम effectiveness की बात करेंगे, so we want to have a few things that we want to discuss. Okay? एक तो हमारी है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट आप मनूवर करना चाह रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट और रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई, द accuracy of central bank in determining the change in interest rate the change in interest rate and money supply. ठीक, अगर आपने too large uh, of an increase दिखा दिया, too large of an increase in interest rate, तो price levels to fall हो जाएंगी, but it will too large fall in economic growth. Now that may be too compromising for an economy, and that may create a very big, a sharp fall in economic growth, and may also reduce unemployment or slash and increase unemployment. So that can be very problematic, right? So ये आपका एक डिस्कशन ये हो सकता है कि आपकी पॉलिसी की जो सर्टेनिटी है that can be questionable. ठीक हो गया? और क्या बात हो सकती है मॉनेटरी पॉलिसी की? एक जो हम बहुत ही रेगुलरली, वेदर फिस्कल हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, we like to talk about the time lag. The time lag is about, क्योंकि remember inflation को आपने कंट्रोल करना था, by that point you identify inflation and you change the policy, take, and the impact of policy, इसके अंदर there is a delay, and that delay may not help us reduce inflation effectively, quickly, maybe, and there may be a lag in the economy. टाइम लग रहा है उसका इम्पैक्ट आने के अंदर, तो उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर कुछ डिस्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट्स आ सकते हैं. ओके, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज वी वांट टू सी रिजल्ट्स क्विकली, बट क्या होता है कि टाइम लगता है. फिस्कल में वी बीन राइटिंग के 18 महीने लग जाते हैं फिस्कल को इम्पैक्ट करने में. मॉनेटरी इज फास्टर देन दैट, देन फिस्कल, but again it does not happen overnight. Certain part of the economy reacts very quickly, like the stock market, that reacts very quickly because people instantly, interest rate bada, they will close their positions, they will sell off the assets because higher वो. लेकिन businesses वगैरह इतनी आराम से अपनी borrowing को change नहीं कर सकते because they have to make certain expenditures um, for running businesses and all. तो आपका क्या कह सकते हैं जो
वर्किंग कैपिटल वगैरह होता है, राइट? ओके। उसके अलावा हमें पता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को चेंज कराता है, कमर्शियल बैंक्स को इंसिस्ट करता है दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो यहां पर हम एक बात करेंगे जो मैं फिलिप कर्व से भी कनेक्शन करूंगा इसका, दैट expectations um, affects the effectiveness of monetary policy. Like, I'll explain it that if consumers and firms expect inflation to continue, then they may increase wages and prices. ओके, अब उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दी और उन्होंने वेजेस भी बढ़ा दी। जब वेजेस बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली बढ़ जाएगा और उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे जाएगा एंड दोबारा बेसिकली इन्फ्लेशन आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, सो इट्स रियली नॉट हेल्पिंग। तो सो दिस will reduce the effectiveness of the contractionary policy। सो वो एक तरीके से हमारी बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट था फिलिप कर्व का जो मैं वापस से लेकर आऊंगा, विच वॉज अबाउट द फैक्ट कि लोग कभी कभार इन्फ्लेशन, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर एंड ऑल, पूरी दुनिया के अंदर नाउ पीपल विल बी expectations of inflation they're going to put in, ठीक है। So we'd say something like that a rational expectations theory argues that in the long run there is no trade-off between inflation and unemployment, as workers will adjust their expectations. This weakens the validity of the Philip curve and suggests that monetary policy may not achieve lower inflation without significant cost। एक दफा फिलिप कर्व का लॉन्ग रन आइडिया जरूर देख लेना, बिकॉज दिस व्हाट वी आर सेइंग, राइट? व्हाट वी आर सेइंग इज कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज वगैरह यूज करते हो। फिलिप कर्व के अंदर खास तौर पे हमारा डिस्कशन ये था कि आपकी कोशिश होती है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें। आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए आप एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज करते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाती है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो एक तरफ जब आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन आ गई।
लोग उस इन्फ्लेशन को एक्सपेक्टेशंस के अंदर बिल्ट इन करते हैं, और वो जैसे ही बिल्ट इन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वर्कर्स की सैलरीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब सैलरीज बढ़ती हैं तो फर्म्स जो है उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड इवेंचुअली दे हैव टू लेट गो ऑफ द पीपल अगेन। तो उसकी वजह से जो है आप वापस से सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अदर देन दिस, आई थिंक हमने ये बात तो कर ही ली है, तो इवैल्यूएशन के अंदर रिपीट ही हो जाएगी कि देयर इज अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन कि जब आप लो इन्फ्लेशन को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको इश्यूज आते हैं। खास तौर पे जब एडी गिरता है, प्राइसेस गिरती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मेजर इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सॉरी, इसका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इम्पैक्ट, ठीक है, उसको देखना जरूरी है। और खास तौर पे जब एक्सचेंज रेट की भी बात आती है तो वहां पे मार्शल लर्नर्स का डिस्कशन भी सॉर्ट ऑफ, आई थिंक मैं अपनी थोड़ा सा इस इवैल्यूएशन को कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई वुड राइट फॉर माय कंक्लूजन, बिकॉज आई थिंक आई हैव डन माय वैल्यू। So I'd say something like my last paragraph. In conclusion, monetary policy can be effective tool for reducing inflation through its impact on aggregate demand and the exchange rate. However, its effectiveness is limited by time lag, uncertainty, and the role of expectations. Okay. Furthermore, it often creates conflict with other macroeconomic aims, particularly economic growth and unemployment, also with the balance of payment. I think usko bhi baat kari. Therefore, while monetary policy is important, it is unlikely to achieve all macroeconomic objectives simultaneously, especially in the short term. Joe, I don't want you to propose alternative policy. It's useless to propose an alternative policy. लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि we are required to argue between other macroeconomic aims, तो फिर आप सप्लाई साइड पॉलिसी की बात कर सकते थे। I think that sort of like concludes this essay. एक मैं बहुत थोड़ा सा जल्दी से is the one that I want to discuss also. Because एक तरफ जब मैंने एक ऐसे मैंने फिस्कल का कर लिया, एक मैंने मॉनेटरी का कर लिया, अब ये आपके स्टैंडर्ड एसेज हैं, ठीक है, जिसमें एम्स के हिसाब से आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मनूवर करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, ओके, with the help of a diagram, assess the effectiveness of government policies, right? So the key thing is policies which might be used to reduce cost push inflation. तो ये बड़ा ही अच्छा ऐसे है because इसके अंदर तो there's plenty of things to write. पहले you need to spend some time on this. बल्कि reduce से भी पहले you gotta spend some time on defining what is inflation. Inflation is a persistent rise in the price level. Cost push inflation क्या होता है? Cost push inflation happens when aggregate supply curve shifts to the left. क्यों होता है? You can suggest some reasons: rise in the cost of raw material, rise in the price of wages, rise in the utility prices like electricity and gas, right? It can be because of depreciation, right? So ये बहुत सारे reasons हैं. You can just briefly suggest some and make a diagram and show me with the diagram कि किस तरीके से जब aggregate supply curve आपका, प्लीज अपने डायग्राम्स की लेबल्स का ख्याल करना। एएस में भी आई टोल्ड दिस प्लेंटी ऑफ टाइम्स, इसमें भी वी विल कंटिन्यू टू रिमाइंड यू, ओके।
मेन आइडिया क्या है, यू वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट? सो पहले हम बता रहे हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती क्या है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है जब एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, causing the prices to rise. And now that you have made it, जरा दूसरे दो macro economic objectives भी बता दो, right? So that's what you have to do over here. And then you also like हमेशा ऐसे should not diagram should not be the first thing that your essay should start with. थोड़े से cost push inflation, first do these terminologies, then draw the diagrams, then maybe some causes of cost push inflation, right? Aggregate supply kyun girega and things like that. First, you do this. Then you can start talking about policies. They haven't told you कि दो policy, तीन policy, पांच policies. So you can give as many. Cost push inflation को control करना है. तो मेनली आप सप्लाई साइड पॉलिसीज ही यूज करेंगे। सप्लाई साइड पॉलिसीज, अब सप्लाई साइड पॉलिसीज के अंदर यूजुअली माय प्रेफरेंस इज द लॉन्ग रन वंस। लेकिन अगर आपको ये हल आपको बताने हैं कुछ शॉर्ट रन रिलेटेड, तो यू कैन टॉक अबाउट हाउ सब्सिडी इंक्रीज करने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा एंड देयरफॉर द प्राइस लेवल्स विल फॉल। You can definitely go for that one. You can also go for indirect taxes जो होते हैं। आप जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर अगर गवर्नमेंट का लेवी है उसको कम कर दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा एंड प्राइस लेवल्स गिर जाएंगी, राइट? सो इट्स द सेम आइडिया रिपीटिंग। अच्छा, there are more other policies also that you can actually discuss over here. अगर फास्ट वाली में टैरिफ्स की बात हो सकती है, इनकम्स की पॉलिसी हो सकती है। इनकम की किस तरह से इफेक्ट आएगा? इनकम्स जब आप कम करेंगे, वर्कर्स विल सी मोर डिस्पोजेबल इनकम, दैट विल मोटिवेट देम, इनकरेज देम टू गो एंड वर्क मोर। तो उसकी वजह से दैट विल बी इफेक्टिव। बट जो हमारा लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन के अंदर तो यू ऑलरेडी नो, आई spoken about it plenty of times. It's about investment in education and training. किस तरीके से वो आपकी स्किल लेवल्स को इंक्रीज करता है और किस तरीके से वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एंड एएस इंक्रीजेस एंड प्रॉब्लम सॉल्व्ड। या फिर यू कैन टॉक अबाउट द इम्प्रूव्ड या इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप एग्जांपल्स देंगे रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, पावर प्लांट्स, थिंग्स लाइक दैट। तो जिसकी वजह से जो है इकोनॉमी के अंदर ज्यादा आउटपुट। और तीसरी जो मैंने हमेशा बोली है, इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजी वन, अडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड ऑल ऑफ दैट। दैट्स ऑल दिस इज अबाउट। फिर आप इसकी इवैल्यूएशन में जाएंगे। इवैल्यूएशन में आपने ये शॉर्ट और लॉन्ग पॉलिसीज को डिस्कस करना है। ईच पॉलिसी को यू विल टेक एंड यू विल डू द काउंटर ऑफ इट। सब्सिडी का इशू क्या है? हो सकता है गवर्नमेंट फाइनेंसेस ना हो, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ जाए, गवर्नमेंट को फ्यूचर में टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे एंड सो। इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, बजट डेफिसिट आ जाएगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाएगा, इंटरेस्ट रिपेमेंट्स वगैरह डिफिकल्ट हो जाएंगी एंड सो ऑन। ओके, या फिर गवर्नमेंट को जो सर्टन स्पेंडिंग की जरूरत है बजट के अंदर कि पब्लिक गुड्स एंड मैरिज गुड्स के ऊपर, दे वोंट बी एबल टू डू इट, राइट? सो समथिंग अलोंग दोस लाइंस आपने इन इंडिविजुअल पॉलिसीज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। लॉन्ग रन की आपके पास सिंपल से मसले हैं। एक तो नंबर वन, इट इज अ बिग टाइम लैग इन्वॉल्व ओवर हियर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू हैव एन इम्पैक्ट। तो इसके अंदर एक टाइम लैग का इशू है, एक इसका एक्सपेंसिव होने का इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ट्रेनिंग एंड स्किल्स के अंदर आप बात कर रहे हैं तो यू कैन टॉक अबाउट हाउ if there is a poor quality, then skills will not rise. और जो आपने स्किल सिखाए हैं वो स्किल्स नॉट इन डिमांड है, तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ इट। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसका देर इज नो लिंक
to economic benefits, जैसे आपका CPEC है, you spend billions of dollars making the infrastructure, but that is not contributing to billions of dollars in transactions and all of that. सही, तो इस तरीके से ये होगा, and then your final conclusion के short run policies such as subsidies and taxation, tax reduction can be effective in the short run to reduce cost push inflation, uh, but they are often, financially unsustainable and may create other economic problems. In contrast, जो आपका long run supply side policies are more effective because they provide like sort of like permanent solutions, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत कॉस्ट लगती है, तो ओवरऑल इफेक्टिवनेस जो है वो आपको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पॉलिसीज यू मे हैव टू इम्पोज बोथ फॉर अ सस्टेनेबल सोल्यूशन, राइट? तो ये इस तरह से तुम्हारा इसका एक ऐसे बन सकता है. अगेन, दिस क्वेश्चन वाज मोर अबाउट फोकसिंग ऑन inflation control, लेकिन and how the policies may achieve that and may not achieve that, right? So ये इस तरीके से ये ऐसे भी किया जा सकता है. I think if I look at it, let me see कि उसने alternative policies पे focus किया है कि नहीं. Because I think आप दूसरे alternative policies को भी you can discuss. Yeah, they're doing it here. Unemployment आ जाना, unemployment का issues वगैरह जो है. So you can talk about that also, but mainly this is what your structure will be, right?